who will go to top 20 universities in the world, who will go to MIT, who will go to Stanford, Harvard, these type of universities. बट मैंने कुछ गलतियां की जो आई वॉन्ट कि नन अदर स्टूडेंट विल डू इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड यस, दिस यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटिटिव. आई वुड से कि कुछ प्रोफाइल लगती. मैंने कितने लोगों से बात करी कि व्हाट वाज योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल में ऐसा क्या रहा था कि जो आप MIT में चले गए. सो हियर आई एम गोइंग टू जोट डाउन 7.7 मिस्टेक्स. मेरे से भी थोड़ा सा कम था एंड दे आर इनटू MIT. Okay, so one of the student with 306 GRE4 is in Stanford. तो ऐसा होता है. ओके, तो आप बाकी चीजों से कॉम्पनसेट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज माय सेकंड एडवाइस कि नेवर स्केयर फ्रॉम योर GRE स्कोर. इन यूनिवर्सिटीज में SOP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आई वुड से इन टॉप 20. ओके, तो उसमें मुझे एडवाइस किया कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिप्लाईज then it means you will not get the selection. I'm sending email in the month of October, November. They're not replying me. I thought कि मेरी प्रोफाइल शायद MIT के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है. बताने जा रहा हूँ. I think it happened to me only. That is a fake acceptance letter. I would scholarship से ये सारा पैसा 3-4 मंथ में आपका वापस आ जाएगा. अगर 2 लाख खर्च होता है, 3 लाख खर्च होता है, it's not a big amount. I'm getting $3,000 per month. Is कि प्रोफेसर्स के रिप्लाईज में मत जाओ. अगर ये कॉलेजेस को आप ड्रीम कर रहे हो तो इनमें अप्लाई कर दो. Okay, hi everyone. Welcome to YourPedia again. So today I want to discuss about a very good topic, I would say, जो बहुत ही I think Indian students के दिमाग में रहता होगा. Who will go to top 20 universities in the world? Who will go to MIT? Who will go to Stanford, Harvard? These type of universities. कौन है वो students जो वहाँ पे जाते हैं? Okay, so जब मैंने PhD के लिए अप्लाई किया था इन 2021, आई हैड वेरी गुड प्रोफाइल. आई हैड 4 पब्लिकेशंस. तो उसमें मेरे 2 जर्नल पेपर थे, एक कॉन्फ्रेंस पेपर था, एक बुक चैप्टर था. आई वॉज फ्रॉम IIT कानपुर. मेरी MTech जो थी वो IIT कानपुर से थी. एंड माई GRE स्कोर वॉज ऑल्सो डिसेंट. Not very good, but it was decent. It was 314, I believe, in 2021. तो बट मैंने कुछ गलतियां की जो आई वॉन्ट कि नन अदर स्टूडेंट विल डू इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर 7 mistakes which I did, and I don't want कि any of the student made that mistakes which actually stopped me to getting into MIT. मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था एंड कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको एक्चुअल में इस सिस्टम में आगे पता लगती है. विच आई केम हेयर इन US इन 2021. आई रियलाइज सम ऑफ द पॉइंट्स कि यस, दीज आर द थिंग्स विच आई मेड मिस्टेक्स एंड विच आई वॉन्ट कि कोई और स्टूडेंट ना करे. एंड यस, दिस यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटिटिव. आई वुड से कि कुछ प्रोफाइल लगती है यहाँ पे. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी प्रोफाइल में कुछ नहीं एंड यू वुड से कि मैं MIT चला जाऊँ, स्टैनफोर्ड चला जाऊँ, हार्वर्ड चला जाऊँ. इट्स नॉट लाइक दैट. बट अभी हुआ क्या कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, दैट इज नॉर्थ अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस. रिसेंटली वो रटगर्स यूनिवर्सिटी जहाँ मैं PhD कर रहा हूँ, it happened over there, and I met lot of students from different universities. I met lot of professors. So some students came from MIT also. Some international students came from MIT. So I just get a chance and I talk to them. तो मैंने कितने लोगों से बात करी कि what was your profile, आपकी प्रोफाइल में ऐसा क्या रहा था कि जो आप MIT में चले गए. So here I'm going to jot down 7.7 mistakes which I did, and I don't want कि any other people will do that type of mistake. तो पहली मेरी गलती क्या थी कि when I was applying here, I did not have any mentor, any good mentor, I would say. I was talking to one person, वो US में ही थे, वो PhD कर रहे थे यहाँ से. So I was taking guidance from him. Though my profile is good, but मेरा GRE स्कोर देख के उन्होंने बोला कि I think bro MIT is difficult. Okay, and मेरा जो undergrad था वो Tier 3 कॉलेज था इंडिया में. So he told me यार MIT तो बहुत difficult है, but actually if you ask me now, MIT was not difficult. तो first thing जो सबको कहना चाहता हूँ कि आप सेफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, बट आई वुड से कि आप 3 या 4 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करो. दैट मिस्टेक आई डिड. आई नेवर अप्लाई टू MIT बिकॉज दिस मेंटर ऑफ माइन, ही वाज सेइंग कि प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है. बट नाउ एक्चुअली आई मेट सम पीपल हु हैव प्रोफाइल विच इज, आई वुड से कि मेरे से भी थोड़ा सा कम था एंड दे आर इनटू MIT. ओके, बट उसके लिए कुछ और फैक्टर्स है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस कि उनका MIT में कैसे हो गया एंड व्हाई आई एम नॉट हियर इन द MIT. Okay, so first thing,
मेंटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए एंड ऑलवेज गो टुवर्ड्स मोटिवेटिंग मेंटर जो आपको रियलिस्टिक तो बताए, बट कई बार क्या होता है कि एक मोटिवेशनल फैक्टर भी चाहिए होता है एंड दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इनटू दिस प्रोसेस। तो कोई ऐसा मेंटर होना चाहिए जिसको इन एंड आउट खुद को सब कुछ पता हो एंड देन दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू एंड गोइंग टू एडवाइस यू, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं अपने जीआरई स्कोर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा था, मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि आई थिंक माई जीआरई इज नॉट 320 प्लस, तो मुझे एमआईटी में नहीं मिलेगा। आई थॉट व्हेन आई वाज इन इंडिया, आई थॉट कि 330 प्लस या 325 प्लस वाले लोग हैं उनको एमआईटी में जाने का चांस मिलता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, इट इज मिथ ओनली। People with 306 GRE score, one of the student with 306 GRE score, he's in Stanford. तो ऐसा होता है, ओके, तो आप बाकी चीजों से कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो जीआरई स्कोर को एक क्राइटेरिया मत सोचना। जीआरई स्कोर जो होता है अगर वो वेव्ड ऑफ है कहीं पे, तो नेवर सबमिट योर लेस जीआरई स्कोर। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जीआरई रिक्वायर्ड नहीं था, आपने सबमिट कर दिया, बट क्या होगा कि उन्होंने लिखा होगा रिक्वायर्ड नहीं, बट अगर आपका कम होगा तो दैट विल बी द वन फैक्टर विच दे विल कंसीडर, यार ये बच्चे का एप्टीट्यूड थोड़ा सा कम है। सो दैट इज माय एडवाइस कि जीआरई स्कोर सबमिट मत करो अगर नहीं चाहिए। अगर 314 315 तक है तो डरो मत, एमआईटी और आई वुड से कि टॉप 20 यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ पे आपको लगता है कि सम प्रोफेसर इज देयर हु इज वर्किंग इन द एग्जैक्टली सेम डोमेन, अप्लाई करो। ओके, so this is my second advice कि never scare from your GRE score. Okay, third thing is SOP. मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने ये सारा प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट किया। I made up my mind in the month of mid October, I would say. मैंने mid October को सोचा कि I would go for PhD. Okay, and mid October is very very late for the fall semester. Mid October को मैंने सोचा, after that I wrote TOEFL exam. GRE मैंने पहले दे दिया था। GRE अगर आपको GRE प्रिपेयर करना है then again it will take some time. So TOEFL को मुझे 15-20 days लग गए, तो नवंबर आ गया। नवंबर में जितनी देर मुझे ये सारा प्रोसेस पता लगा, आई वॉज लेट टू प्रिपेयर अ वेरी गुड SOP। तो इन यूनिवर्सिटीज में SOP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आई वुड से इन टॉप 20। ओके, तो आपको SOP में बहुत अच्छी स्टोरी लिखनी होती है एंड यू हैव टू गिव देम प्रॉपर रीजन व्हाई यू आर अ बेस्ट फिट फॉर MIT, व्हाई यू डिजर्व MIT नॉट अदर स्टूडेंट। तो उसमें आपको अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताना है कि मैंने रिसर्च करिया, हैव पब्लिकेशंस, मैं इस फील्ड में जानता हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड मोर। ओके, तो इसके अलावा आपको अपनी मोटिवेशन बतानी कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आफ्टर PhD भी करना चाहते हो, PhD आपके ड्रीम्स को कैसे अकम्प्लिश करेगा। तो एक हुक जरूर होनी चाहिए SOP में कि व्हाई यू वांट टू डू PhD, व्हाट आफ्टर PhD एंड व्हाई यू डिजर्व MIT। तो उसमें आप अपनी डाइवर्सिटी इंक्लूड कर सकते हो कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो आई विल ब्रिंग डाइवर्स कल्चर टू MIT और टू दिस लैब। तो इस तरीके से व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर, ओके, एंड व्हाई पर्टिकुलर दिस लैब ओनली, व्हाई नॉट अदर लैब्स इन US। तो ये सारी चीजें आपको SOP में मेंशन करनी है। SOP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो टू टॉप 20 फॉर PhD। अगर आपको टॉप 20 में नहीं जाना, उसके नीचे SOP का उतना ज्यादा रोल नहीं होता, बट टॉप 20 में इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। यस, नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि आई हैड वन मेंटर, तो उसने मुझे एडवाइस किया कि US में आपको ईमेल्स वगैरह करनी होती है प्रोफेसर को। आई सेंट लॉट ऑफ ईमेल्स, आई गॉट सम रिप्लाईज, बट आई डिड नॉट गेट रिप्लाईज फ्रॉम MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिप्लाईज देन इट मीन्स यू विल नॉट गेट द सिलेक्शन। ओके, तो उस टाइम पे मैंने बिलीव कर लिया कि शायद ही सेइंग करेक्टली कि अगर प्रोफेसर का रिप्लाई नहीं आया, कुछ यूनिवर्सिटी से आई गॉट रिप्लाई, बट नाउ आफ्टर 2 years इन यूनाइटेड स्टेट्स आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं होता है कि only based on the professor reply you will get the admission. So one thing I would advise कि US में स्ट्रक्चर क्या है कि top 20 universities and after like top 20 university, in top 20 university professor will not reply you directly, they always tell you कि first apply to the college, apply to the university, graduate committee once they will select you, once you are selected then they start replying you। okay, कि अगर आप ग्रेजुएट कमेटी से ऑफर लेके किसी प्रोफेसर को ईमेल कर दो then they will start replying you back. I was not aware about this thing. I was sending email in the month of October, November. They're not replying me. I thought कि मेरी प्रोफाइल शायद MIT के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, तो but I was wrong. I should apply to MIT.
maybe I got the offer letter because I had 4 publications. I was from IIT. इससे अच्छा प्रोफाइल किसी का नहीं होता. Indian and Chinese students, they are very very good researchers. I would say कि अगर आप इंडिया से हो, चाइना से हो, if you are from IIT NIT, then you are like among the top 1% in the world. तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए if you think you have good profile. And never wait for the professor's reply in these type of universities. If you ask me, sir, I'm applying in top, like in US ranking, my university is coming at 35th. I would say कि वहाँ तुम्हें professor reply करके पहले ही बता देगा कि you're going to get selection or not, but not in top 20. So this was my another basically mistake. Next thing, I think next जो point मैं बताने जा रहा हूँ, I think it happened to me only. That is a fake acceptance letter, I would say. तो इसमें क्या हुआ था कि I applied to one university, that is University of South California. So in the month of December itself, one of the professor told me कि your profile is very good and I am going to hire you in my basically research group. So that is from University of Southern California. I was very happy at that time कि जब आपको उस टाइम पे US से किसी प्रोफेसर का इस टाइप का रिप्लाई आता है. I am very happy and he told me कि I am going to hire you and I am going to give you fellowship. Then one thing he told me कि हमारा अभी clerical staff, they are on Christmas vacation. Wait for 10-15 days. I will work on your offer letter. तो मैंने क्या किया उस टाइम पे कि मैंने I think 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया and I stopped. I thought कि यार इससे तो आ गया अब acceptance letter. इस प्रोफेसर ने मुझे हायर कर लिया. I'm not going to apply to another university now. Okay, I'm going to save my money. So that was actually fake acceptance. After 15-20 days, जब clerical staff वापस आया, I missed all the deadlines because many universities have deadline in like 15 December, 1st December, 10th January. He told me on 22nd January, sorry, we can't hire you. And he did not give me any explanation regarding that. So that was fake acceptance. I got it from one professor. That was verbal thing on email. Never get trapped in these type of offers. Till the time you get actual offer letter from the university, never thought like you got admitted to any of the university. This was the mistake which I did, and I stopped basically applying in another university. I was planning to apply in Princeton, MIT, but I stopped in between because he was saying I hired you, you got selected in my research group. But that was the fake acceptance letter. Okay. Next thing, which is very very important for these type of universities, MIT, Stanford, Harvard, कि अगर आपको यहाँ पे जाना है, what you have to do, instead of CV, instead of SOP, cover letter, जो भी आप submit कर रहे हो, you have to make your portfolio. That is again very very important, which I never knew when I was in India. कि यहाँ पे आने के लिए आपको portfolio बनाना होता है. So what is portfolio? You can make your own website, make your own homepage, and just upload everything about yourself, about your research. जो आप CV में mention नहीं कर सकते हो, SOP में mention नहीं कर सकते हो, like figures, whatever results you got in your research during masters, वो सब एक portfolio में डाल के आप उसको upload करो एक home page अपनी website. Nowadays it is very easy when this AI tools come. It is very very easy. So make one portfolio, which is very important. Make one website of yourself and make your homepage, upload each and everything over there. So that has different impact on your profile. When these type of universities, they check your CV and all, if you have link of your homepage, then they always check that. They check each and everything what you did, and they basically got inclined towards yourself कि this guy is actually maintaining his own website. तो उसका एक अलग impact है portfolio बनाने का. So that is very very important step, I would say. कि now I realize in PhD I'm going to make my portfolio. Then now I will try for postdoctorate in MIT or Stanford or Harvard. Okay. And last जो 7th point मैं बताना चाहता हूँ, many students, they don't apply to these type of universities due to budget issues. They will say कि यार US में सर बहुत फीस होती है, हर यूनिवर्सिटी आपको $75 से $100 के बीच में चार्ज करते हैं. These universities even charge you $130 sometimes. तो my advice to you is कि बजट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, and take loan from somewhere, borrow some money from your friend, because ये जो सारा पैसा तुम खर्च करते हो, it will be easily recovered in 3-4 months when you are in PhD. You start earning in dollars. तो स्कॉलरशिप से ये सारा पैसा 3-4 मंथ में आपका वापस आ जाएगा. अगर 2 लाख खर्च होता है, 3 लाख खर्च होता है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट. आई एम गेटिंग $3,000 पर मंथ इन रटगर्स यूनिवर्सिटी. तो 3,000 इज लाइक 2.5 लाख. तो आप 3-4 मंथ में इजीली रिकवर कर लेते हो सारा पैसा जो आपका खर्च होता है.
तो दिल खोल के पैसा लगाओ इस एप्लीकेशन फॉर्म में, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. एंड दिस tag of this like very big universities, it will always remain with yourself. तो ये जो 7 पॉइंट्स थे, फर्स्ट थिंग इज बेसिकली गुड मेंटर, सेकंड थिंग की नेवर स्केयर फ्रॉम योर जीआरई, थर्ड थिंग मेक अ गुड एसओपी, एसओपी में हुक होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होने चाहिए कि आप क्यों इन कॉलेजेस में आना चाहते हो. फोर्थ थिंग इज कि प्रोफेसर्स के रिप्लाईज में मत जाओ, अगर ये कॉलेजेस को आप ड्रीम कर रहे हो तो इनमें अप्लाई कर दो. लेट ग्रेजुएट कमेटी डिसाइड, अगर आपको रिप्लाई आता है उसके बाद प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, चांसेस ज़्यादा है कि आपको रिप्लाईज आना स्टार्ट करें. फेक एक्सेप्टेंस लेटर में मत जाओ, दैट इज माई फिफ्थ पॉइंट, कि अगर आपको कोई प्रोफेसर फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी इफ ही सिंग वर्बली लाइक आई एम गोइंग टू हायर यू, मीटिंग हुई आपकी, जूम मीटिंग हुई, उसमें प्रोफेसर ने बोल दिया कि अप्लाई करो, आई एम गोइंग टू हायर यू, never believe on that until and unless you get the acceptance letter from that university. Sixth point, make your portfolio, make your website, make your own homepage, अपडेट योर लिंक्डइन, इस टाइप की चीज़ों पे बहुत टाइम स्पेंड करो, रिसर्च गेट पे प्रोफाइल बनाओ, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल अपलोड करो, मेक योर सेल्फ अप टू डेट इफ यू आर टारगेटिंग दीज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज. एंड लास्ट थिंग जो 7th पॉइंट है कि बजट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अप्लाई टू दीज यूनिवर्सिटीज. ओके, सो यू नेवर नो कि आपको लग रहा होगा कि मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट व्हेन यू कम टू यूएस यू रियलाइज कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज वेरी वेरी गुड इन इंडिया, एंड इफ यू हैव गुड CGPA, if you have publications and all, dream about these universities and I would say go to these universities. It is achievable. Okay, so all the very best if you are targeting fall 24 or spring 24. I would say 2 या 3 यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप 20 में जाती हैं, आपको लगता है कि प्रोफाइल मेरा ठीक ठाक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी पब्लिकेशन आई एम फ्रॉम IIT, आई हैव ब्रांड नेम, तो इन यूनिवर्सिटीज में पक्का ट्राई करो. आई वुड से कि चांसेस हैं. So I will come with these type of content again and again. So thank you for watching this video and be on YourPedia. Thank you.